aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for discussion is the Global Greenhouse Gas Watch. We'll see why news, then what is this Greenhouse Gas Watch, इसके components हम देखेंगे इससे related, implementation plan क्या है, कैसे कैसे implement होगा, then what is World Meteorological Organization, some brief explanation just I'll give you about this. After that, ऐसे क्या steps हैं by this World Meteorological Organization that will address the global warming. After that, we'll be studying our today's prelims set test question based on this topic. So let's start. Why news? Recently 19th World Meteorological Congress हुआ है और इसने अप्रूव किया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच को. ये एक मॉनिटरिंग इनिशिएटिव है एंड इट विल हेल्प टू रिड्यूस द हीट ट्रैपिंग गैसेस जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज व्हिच इज हैपनिंग. नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन हाउस गैस वॉच इन डिटेल इफ विल सी. सो ये इट विल एस्टैब्लिश a coordinated top-down monitoring of the greenhouse gases fluxes, and it will also help to support the provision of actionable information to the UNFCCC parties and other stakeholders in it. ये जो न्यू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच होगा ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गैप्स को फिल करेगा एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क अंडर वन रूफ. Then this framework it will bring all the space based, surface based observation systems as well as modeling systems, data assimilation capabilities under one roof. So this is how it is. Then what are the components of this? So first of all, surface based, satellite based observations hai. Then prior estimates of greenhouse gas emissions and that too based on the activity data and process based models. Then global high resolution earth system models honge representing the greenhouse gas cycles. Data assimilation systems होंगे that would be associated with models to generate products of higher accuracy. So these are the components of it. So what is the 2033? So it's a decade plan. What is the implementation plan? ये जो plan है इसका aim है better health and well-being for people facing existing and emerging extreme weather events, climate change and environmental risks through the effective integration of the climate, environment and health science and services across the world. So this is the primary initiative or aim. And इसका एक aim और है that is to promote a coordinated approach to manage the impact of climate change, weather, air pollution, ultraviolet radiation. So इन सब में coordinated approach available कराने का भी इसका एक aim है. This is the global carbon budget. So these are the total emissions. Suppose that this is around the 40.1 tons and here just total sink is 21.7. So this is the carbon budget which we have right now and atmospheric CO2 जो growth rate है वो 18.4% पे रुक जाता है जो कहीं भी सिंक नहीं हो पाता. So this land use जो होता है it is very uncertain. Industrial use, fuel use is of some uncertainty. So अगर वर्ल्ड इस पर फोकस करता है कि इनको कम कर लिया जाए so इसका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दिस विल नॉट वर्क. सो फोकसिंग ऑन एफर्ट्स ओनली ऑन द एरियाज जिनका लो अनसर्टेनिटीज है इट विल नॉट वर्क क्योंकि यहां से भी काफी ज्यादा ग्लोबल कार्बन बजट बनता है. एंड हियर आर द सिंक्स. ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो 192 मेंबर स्टेट्स हैं एंड टेरिटरीज हैं. इंडिया इसका मेंबर है और ये जो स्टैब्लिश हुआ था दैट वाज बाय द WMO कन्वेंशन ऑन 23 मार्च ऑफ 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था. ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की फॉर मेट्रोलॉजी, वेदर, क्लाइमेट, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी, रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेस. सो दिस इज व्हाट इट इज. व्हाट आर द अदर स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन अंडर इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज WMO's ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन. ये प्रोवाइड कराता है एनुअल अपडेट्स को टू द UN क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस on atmospheric concentration of the main long lived gases. So इनका जितना भी हुआ है उसका एक annual update देता है ये. The gases are the methane, carbon dioxide, carbon, nitrogen oxide and all. So now this एक WMO का global atmosphere watch program है. It provides information and also services on atmospheric compositions to the public and also the decision makers which are there. And this all would be relating to the steady increasing amounts of greenhouse gases and especially carbon dioxide के impacting the climate. ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं. Provides information basically.
Next is the integrated global greenhouse gas information system. इसका जो एम है दैट इज टू कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इंफॉर्मेशन सिस्टम. इट विल लिंक इन्वेंट्री फ्लक्स मॉडल बेस्ड इंफॉर्मेशन विद एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन से लिंक करेगा मॉडलिंग से, एंड टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस at the national and urban scale. So this is the use of this system. Now let's discuss our today's prelims practice question. So question 1 says the natural process of the atmosphere heating through the trapping of re-radiated infrared radiation is known as the greenhouse gas effect, thermal inversion, solar heating, or the global warming. Next question says what are the benefits of implementing integrated watershed development program? Preventing soil runoff, linking the country's perennial rivers and seasonal rivers, rainwater harvesting and recharge of the groundwater table. 4 is the regeneration of natural vegetation. Select the correct answer using the code given below. Here you can even use elimination and also try to practice with the recent trend, which is only 1, only 2 statements, only 3, or all 4. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day. Hope you understood it. Stay tuned with Analyst IAS for a better preparation.